Good morning. Good morning, students. I am Simta from JPPS. Today's today we start chapter 8. Chapter 8 is quadrilateral. Chapter 8 is quadrilateral. Before start chapter, we recall about some fact. First is quadrilateral. Student, what is quadrilateral? A closed figure bounded by four line segment. A closed figure bounded by four line segment is called quadrilateral. स्टूडेंट आपके पास क्लोज फिगर है. क्लोज फिगर क्या है? फोर लाइन सेगमेंट से क्या है? बाउंडेड है. देन फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. नाउ स्टूडेंट्स, वी ड्रॉ ए फिगर ए बी सी डी. दिस फिगर इज क्लोज. स्टूडेंट आपके पास जो फिगर है वो क्या है? क्लोज है. फोर लाइन सेगमेंट से क्या है? बाउंडेड है. फर्स्ट लाइन सेगमेंट क्या आपके पास? ए बी है. सेकंड बी सी, थर्ड सी डी एंड फोर्थ इज ए डी. दिस फिगर इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, सो दिस फिगर इज ए क्वाड्रिलेटरल. स्टूडेंट, दिस फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, सो दिस फिगर इज क्वाड्रिलेटरल. Student, see here AB, BC, CD and AD. These are called side of quadrilateral. AB, BC, CD and AD. These are called sides of quadrilateral. Same A, B, C and D. A, B, C and D. These are called vertex of quadrilateral. Student, these are called vertex of quadrilateral. Now, student, see here AB and CD. Side AB and CD are opposite sides. AB and CD आपके पास कैसी है? Opposite sides. Because side AB have two vertex. First is A, second is B. Side CD have two vertex. First is C, second is D. No vertex is common. स्टूडेंट, बोथ साइड के पास वर्टेक्स कॉमन नहीं है, सो दीज साइड आर अपोजिट साइड. सेम एज इट ए डी एंड बी सी, दीज आर ऑल्सो अपोजिट साइड. सो स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड इज 4, नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 4, नंबर ऑफ एंगल इज 4 एंड टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड. फर्स्ट इज ए बी एंड सी डी, सेकेंड इज ए डी एंड बी सी. नाउ इफ वी जॉइन, AC is diagonal of quadrilateral, as it BD is diagonal of quadrilateral. So in quadrilateral we have two diagonals, first AC and second is BD. Now students, we given this figure. This figure is not quadrilateral. Student, आपके पास figure given है. Given figure क्या है? Not quadrilateral because it is bounded by 5 line segment, first, second, third, fourth and fifth. This figure is not quadrilateral because it is bounded by 5 line segment, so it is not quadrilateral. Same student, this figure is not quadrilateral because this bounded by 1, 2, 3, 4 and 5. This is bounded by 5 line segment. So student, a closed figure bounded by 4 line segment is called quadrilateral. Now next is theorem of quadrilateral. Theorem is, if in quadrilateral sum of all interior angles is 360. Theorem is, in quadrilateral sum of all interior angle is 360. It means आपके पास quadrilateral है A, B, C, D. Quadrilateral have 4 angle. First is A, second B, C, D. Sum of these angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360. Student, theorem is, in quadrilateral sum of all interior angles is 360. It is called angle sum property. Student, this is called angle sum property. We prove this theorem. First, given, what is given? Given ABCD is a quadrilateral. What is given? ABCD is a
quadrilateral. And student, what we prove? To prove, क्या प्रूव करना है आपको? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. स्टूडेंट, वी प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360. नाउ स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन. We draw construction. Now join AC. कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? Join AC या join diagonal AC. So join AC. Now student, we have two triangle. First is ABC. Student, we have two triangle. First triangle is ABC. Second triangle is ADC. We have two triangle ABC and ADC. Student, we know that angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. In triangle, sum of all angle is 180. So student, in triangle ABC. Student, in triangle ABC, this is angle CAB. This is angle CAB, this is angle ABC, and this is angle BCA. So in triangle ABC, CAB plus ABC plus BCA equal to 180 degree. Student, in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is 180 by angle sum property of triangle. By angle sum property of triangle. Now student, as it in triangle ADC. Student, in triangle ADC, these three angles are formed. So sum of these angle is 180. So angle DAC plus ADC plus DCA equal to 180 degree. Now students, adding both first and second, adding equation 1 and equation 2. स्टूडेंट, आपने क्या किया? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया. सो वी ऐड CAB प्लस ABC प्लस BCA प्लस DAC प्लस ADC प्लस DCA इक्वल टू 180 प्लस 180 360. नाउ स्टूडेंट, CAB एंड DAC एट बोथ एंगल. आपने क्या किया? CAB एंड DAC को ऐड किया. सो CAB प्लस DAC. नाउ स्टूडेंट, एंगल ABC as 8. नाउ add BCA and DCA. Angle BCA plus angle DCA plus angle ADC equal to 360 degree. Now student, CAB, this angle CAB plus DAC. स्टूडेंट, आप बोथ एंगल को ऐड कर रहे हो तो सिंपली आपके पास एंगल ए फॉर्म होगा, नहीं होगा? CAB plus DAC. Now we add both angle, so we find angle A. So when with this angle we find angle A. Now ABC, ABC can write angle B. Same student, BCA this angle plus DCA plus DCA. When we add this angle we find angle C. So angle C plus ADC which is angle D equal to 360 degree. So student,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 degree. So in quadrilateral, sum of all interior angles. So student, in quadrilateral, sum of all interior angles is 360 degree. It means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360. It is called angle sum property of quadrilateral. Student, आपके पास क्या है? Angle sum property of quadrilateral.